देखिए बहुत शॉकिंग इंसिडेंट है, इसलिए भी शॉकिंग है क्योंकि जो ये अफसर हैं वो खुद महिला एवं बाल विकास विभाग में काम कर रहे थे, और अगर उन पर किसी माइनर के रेप का आरोप लगता है तो फिर ये बहुत ही एक चिंताजनक बात है हमारे लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, और ऐसी कार्रवाई करेगी जो इस शहर के, इस देश के किसी भी व्यक्ति के लिए एग्जाम्पल बने कि वो किसी भी महिला को, किसी भी बच्ची को गलत निगाह से ना देखें। विपक्ष तब तक संज्ञान में नहीं आया, वो लगातार काम करते रहे, अपनी ड्यूटी करते रहे। देखिए हमारा तो किसी भी अफसर से लेना देना उनकी ड्यूटी आवर्स में होता है। किसी भी अफसर पर किसी प्रकार के क्रिमिनल चार्जेस हैं, वो अपने पर्सनल समय में क्या कर रहे हैं ये तो हमें मालूम नहीं होता, पर जैसे ही ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया उन्होंने तुरंत चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि पेंडिंग इंक्वायरी अफसर को, जो कंसर्न्ड अफसर हैं उनको सस्पेंड किया जाए, तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आज शाम 5 बजे तक CS से रिपोर्ट भी मांगी है। ये कहा जा रहा है कि वो आप नहीं, ये बिल्कुल गलत खबर है। उन्होंने मेरे साथ कभी भी OST के तौर पे नहीं काम किया है। अभी जो मतलब उनको गिरफ्तार किया गया उस कार्रवाई से अभी आप लोग संतुष्ट हैं? आगे वो तो कोर्ट में मामला जाएगा, लेकिन अभी इतना होना काफी है? नहीं, बिल्कुल देखिए अरेस्ट तो होना ही चाहिए, पर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द, ये सबसे ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि किसी भी क्रिमिनल की हिम्मत इस देश में क्यों बनती है? क्योंकि उनको लगता है कि जब देखेंगे तब कार्रवाई होगी, फिर मामला कोर्ट में जाएगा, तब तक हमें बेल मिल जाएगी। ना सिर्फ सख्त से सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, बल्कि जल्द से जल्द कार्रवाई की ज़रूरत है कि इस शहर के, इस देश के सभी लोगों के सामने ये उदाहरण बनना चाहिए कि कोई भी किसी महिला को, किसी भी बच्ची को गलत निगाह से ना देखे। और खास करके कोई ऐसा व्यक्ति जो एक अफसर है और खुद जिम्मेदार है महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, बच्चों के विकास के लिए, तो बिल्कुल इस मैटर में दिल्ली पुलिस को और हमारी न्याय व्यवस्था को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। आपकी कार्रवाई का अधिकार अब NCCSA के तहत है, तो आपको लगता है कि उसके पास ये मामला जाएगा तभी उसका सस्पेंशन हो पाएगा? देखिए ये उसमें देखना पड़ेगा कि क्या ये ग्रुप A ऑफिसर हैं कि ग्रुप B ऑफिसर हैं, उसके आधार पे ये डिसाइड होगा। First reaction that's coming in from Atishi, the WCD minister, as far as the Delhi government is concerned. She's gone on to say two things. One, that we'll ensure the strictest punishment is given to the accused. Secondly, also responding to the criticism as far as the close proximity of the accused with the Delhi government. She's gone on to say what an officer does post office hours, it's almost impossible for us to track because our involvement with them is only during work hours. Remember, this comes at a time when there are a lot of questions that are being raised as far as the silence or the inaction as far as the Delhi government is concerned. Let's continue the conversation with our colleagues. Anvit continues to be with us, Anshul continues to be with us, Pallavi also tracking all those developments. But Anshul, coming to you, so that's first reaction that's coming in from Atishi becomes crucial because till now the question was, how come the minister has not reacted? The minister is saying what somebody does post office hours, it's impossible for us to track. Do we have a sequence of events that has now been established of which all departments this man was looking into? Because that will help us to understand where all he was in the past as well. Well, yes, this person, the said person in this entire matter was appointed as the OST to the Women and Child Welfare Minister. That was someone else, not Atishi at that point. Now at this point he was the Deputy Director. Remember, he was made the OST in 2022 March, and after that he was promoted and he was made the Deputy Director of Women and Child Welfare Department of the Delhi government. And over the last 6 to 8 months he was working as the Deputy Director. Now when this incident had happened, in 2020, October 2020 and March 2021. At that point, he was the Assistant Director and not an OST. When the incident had happened, he was an Assistant Director to the Women and Child Welfare Department of the National Capital and not the OST at that point. He only became OST probably a year later. When this incident had happened, he was very much an employee of the Delhi government. We have that exact timeline of how this entire incident unfolded and how
he got in touch with the parents of the victim at a church and told the parents that he is the right person who could take care of the girl because the financial situation of the woman at that point or the mother of the victim at that point was not such that she could provide her with a secure future. And hence decided to take her under his wing, and over the next 6 to 8 months she was living with the accused is what we have been told. But remember, this is a statement that has been given by the accused through her mother, and she was also in a trauma, and that is the reason why the Delhi police did not deem it necessary to arrest that person at that very day when the FIR was registered, because in other cases when a POXO case is registered and the quantum of sentence is above 7 years, that is in this case the Delhi police has the option to go ahead and arrest the accused at that very moment. But yes, the Delhi police waited for this statement that is being made at this point in front of the magistrate, and once this statement is made, then both these accused would be taken into custody. Post that, investigation would happen, and it would be clear if at all this incident had happened, or are there some discrepancies in the statements that have been given by the 14-year-old girl. Okay.